students, myself Debashis Saha as a social teacher, Oriental Public School, Kishanganj. Today I teach you class 7, subject Civics, chapter 7. Today my topic is understanding advertising. This is my second video. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें. पढ़ाई को जारी रखते हो तो आगे की ओर बढ़ते. Just naming the product may not make us buy it. The manufacturer that made the soap and the dal still have to the convenience. Their shop and the dal are better than the other available in the market. देखिए यहाँ पर दाल और साबुन के बारे में डिस्कस किया गया है, बताया गया है कि दाल और साबुन मार्केट में तरह तरह के मिलते हैं, क्वालिटी के मिलते हैं. दिस इज़ वेयर द एडवर्टाइजिंग कम्स इन. इट प्लेस द क्रूशियल role in trying the convenience as to buy the product that is the advertised. The creating the brand does not stop giving the product a special name. देखिए कुछ कुछ ऐसे चीज़ होता है ब्रांडेड, लूज भी मिलता है, पैकेट में मिलता है, तो उसका अलग अलग स्पेशल नेम होता है. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट व्हेन द टॉप टेस्ट डाल बिगन्स टू द सोल्ड अनदर कंपनी डिसाइडेड टू ऑल्सो सेल डाल्स इन द पैकेट and the calls this the best test dal. There are two types of dal. Number one top taste dal and the number two best test dal. Students, listen carefully. So now there are two branded dals in the market. मार्केट में दो तरह के ब्रांडेड दाल मिलते हैं, टॉप टेस्ट दाल और एक बेस्ट टेस्ट दाल. बोथ द कंपनीज आर keen that you buy their dals. The consumer is confused because you really cannot tell the difference between top taste dal and best taste dal. The manufacturer has to give the consumer a reason to prefer a particular brand. Consumer reason to prefer a particular brand of dals. Just naming a dal does not help sell it. So advertisers begins the claiming the certain special value for their brand. देखिए कुछ कुछ ऐसे चीज़ होते हैं ब्रांड पे ज़्यादा उस पर ऐड किया जाता है, ये ब्रांड का ये ब्रांड का ये ब्रांड, तो हम लोगों को पता चलता है कि ये इसमें इस ब्रांड में इतना ऑफर, इस ब्रांड का इतना ये है. In this way, the try to differentiate in the form other similar products. Look below how to the two dals try to this form the advertising means you can now see the two dals are saying different things. Top taste dals is applying to our social tradition, treating the guest extremely well. टॉप टेस्ट डाल का स्टूडेंट्स हम लोग कभी इस्तेमाल कर यूज़ करते हैं जब हमारे घर में कोई प्रोग्राम, कोई मेहमान गेस्ट आते हैं, तो टॉप टेस्ट डाल को हम लोग इस्तेमाल, सबसे कॉस्टली एक्सपेंसिव डाल होते हैं. देन बेस्ट टेस्ट डाल इज अप्लाइंग टू आवर कंसर्न ऑफ आवर चिल्ड्रेन हेल्थ एंड दैट. बेस्ट टेस्ट डाल हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं, अपने बच्चे को खिलाते हैं, हम लोग खुद खाते हैं. ईट थिंग्स दैट आर गुड फॉर देम. वैल्यू सच स्टेटिंग आवर गेस्ट्स वेल डन, our guest well and making sure our children get nutritious food and used by brands. To create the brand value, this brand value are conveyed through the use of visual and words to the give us to the overall images that the appeals to us. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से हम लोग आगे लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. पढ़ाई को जारी रखते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रांड वैल्यू एंड सोशल वैल्यूज़ के बारे में. चलिए क्लास में ये पढ़ाई को जारी रखते आगे बढ़ते, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. एडवर्टाइजमेंट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोशल एंड कल्चरल लाइफ टुडे. एडवर्टाइजमेंट जो है हमारे सोशल कल्चरल लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है. We watch the advertisement, discuss them, they often judge the people according to the brand's products they use, given that the advertisements are such a powerful source of the influence in our lives. We need to be able to understand the way in which they work. Branded dals cost much more than dals that are sold loose because they include the cost of the packaging and advertising. Branded दाल जो होते हैं स्टूडेंट्स, जो कि लूज दाल से ज़्यादा दाम होते हैं, पैकेजिंग का चार्ज उसमें लिया जाता है, उसका एडवर्टाइजमेंट का चार्जेस कस्टमर से लिया जाता है. सो मेनी पीपल्स कैन नॉट अफोर्ड देम. हाउएवर बिकम ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टॉप टेस्ट दाल माइट्स बीइंग टू फील दैट दे आर नॉट ट्रीटिंग दैट देयर गेस्ट प्रॉपरली. कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके पास उतना ये नहीं होते, वो टॉप टेस्ट डाल का इस्तेमाल नहीं कर पाता गेस्ट को प्रॉपरली. कुछ लोग क्या होते हैं, कोई भी प्रोग्राम कुछ भी होने से टॉप टेस्ट डाल का इस्तेमाल करते हैं. ग्रेजुअली पीपल विल कम टू बिलीव्स दैट द ओनली ब्रांडेड डाल्स आर गुड and will want to buy the dal that comes in a sales packets rather than the which is sold loose. But it reality there is a little difference between the dals that has a sold loose and those sold in the packets. We are just made to imagine
the difference because of the advertisements. In the case in care, shop advertisements owns again a personal emotions is begin used. As a mother, if you want to show your child your care, एक माँ अपने बच्चे का ख्याल सही ढंग से रखना पसंद करती है, चाहे वो कैसे भी हो, बच्चे को अच्छे से अच्छे साबुन का इस्तेमाल कराते हैं, बच्चे को अच्छे से साफ सुथरा रखना. द एडवर्टाइजमेंट्स यूज टू द मदर्स कंसर्न फॉर देयर चाइल्ड. इट टेल्स द मदर that her the love and care is the best show in the through using the particular brand shop. Because of this, the mother begin to feel that using these shops is sign and of how much they love their child. In this way, the advertisements used use the love to a mother for the child to sell these expensive shops. A mother who cannot afford these shops might begin to feel that they are not giving their children the best care. As you can see with the two advertisement, दो तरह के advertisement होते हैं. They often target our personal emotions by linking our personal emotions to products, and advertisements tends to influence the way in which they value ourselves or person. Often several of our cricket heroes and our favorite the stars एडवर्टाइजमेंट के लिए क्रिकेट के हीरो क्रिकेट पर्सनालिटी को ये किया जाता है, हायर किया जाता है. फिल्मी दुनिया से फिल्म एक्टर्स को हायर किया जाता है ताकि मार्केट में उस चीज़ का ज़्यादा ये हो सके. वी मे फील टेम्पेड टू बाय द दिस प्रोडक्ट्स बिकॉज द पर्सनस whom the considers and our heroes tell us that they are what buying in the buying buying in the editions. Advertisements often show us images of the lifestyle of rich people and seldom show us the really of people's lives that we are around us. Advertisements play a big role in our lives. We not only buy products based on them, but often having the certain brands products influences the way in which the think about ourselves, our friends and our family is therefore important to know how advertising works and understands what is does before we choose the buy products the advertisements sell. We need to able to critically understand why they are use particular images, the personal emotions that they are applying to the way in which this appears. How we think about the ourselves when we use the products are not be able. देखिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में, लोग जिसके बारे में जानते हैं लोग उसको परचेस करते हैं, उसका रेट रीजनेबल होते हैं, और हर जो टॉप प्रोडक्ट की चीज़ होते हैं हर आदमी उसको ये नहीं कर पाते, परचेसिंग नहीं कर पाते क्योंकि उसका दाम ज़्यादा होता है. चलिए बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे. आज हम लोग क्लास 7 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग के बारे में. चलिए आगे हम लोग पढ़ाई को जाए तो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं. How does an advertisements get made? And advertising is a very important part of the getting people to buy a brand. कोई भी ब्रांड के लिए एडवर्टाइजिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. This does not happen easily and the several hundred books have been written on this advertisements aim to get people to buy a particular brand. This is the basically means that after we can advertisements we should want to buy the brand. Let us see how the persons who make advertisements decides on the images, text and the personal emotions to use the sell at the product. कोई भी चीज़ को हम लोग खरीदते हैं उससे पहले उसका ऐड मार्केट में ऐड होता है, उसको हम लोग देखते हैं गौर कर, उसके उससे पता चलता है कि ये मार्केट में ये प्रोडक्ट में ये सेल लगा हुआ है, ये चीज़ इतना ये है. नेक्स्ट टॉपिक टुडे माय नेक्स्ट टॉपिक एडवर्टाइजमेंट एंड डेमोक्रेसी. देयर आर द वेरियस वे इन विच द advertising things to the issue of the equality in the democratic society. Advertising products cost a lot of money, usually crores of the rupees of the spent advertising a brand. एक ब्रांड का एडवर्टाइजिंग करने में ये कंपनी को करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है. प्रोडक्टिंग इज शोइंग द एडवर्टाइजमेंट्स इन ए मीडिया इन ए वेरी expensive because there are so many advertisements in the market. Today the companies have the show the advertisements again to have to stick in the people minds. What this often means that it's only large companies can advertise this. If you can own a small business, you will not have money to show your products on TV or national newspaper and the magazines. So persons who well papad, pickles, sweets and jams, they are the have made a home. हम लोग जैसे कुछ प्रोडक्ट को घर में भी अपने से होममेड तैयार कर सकते हैं. जैसे उसमें पापड़ हुआ, पापड़ को बना सकते हैं, पिकल्स अचार को, मिठाई
जैम्स को बना के घर में होममेड बना के उसको हम लोग बेच सकते हैं. दे हैव मेड द होम एंड नॉट ए कंसिडर टू फैशनेबल एज ब्रांड प्रोडक्ट्स. दे आर ऑप्टेन हैव ए सेल प्रोडक्ट्स इन वीकली मार्केट्स इन नेबरहुड्स एट शॉप्स एंड विल रीड अबाउट इन फॉलोइंग यूनिट. ये सब चीज़ को हम लोग वीकली मार्केट में बेच सकते हैं और घर के आसपास के दुकान में ले जाके इसको दे सकते हैं, वहाँ भी इसका बिक्री हो सकता है. इट ऑल्सो मेक्स अस द बिलीव दैट द थिंग्स दैट आर द पैकेजिंग एंड हैव टू ब्रांड नेम एंड लेट for better than the things that we do not come to packets. We forget the quickly of products has a little to do with the packaging that it comes in. This shifts to package products negatively after affects the sale of the several small businesses, forcing people out of their livelihood. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें. पढ़ाई को जारी रखते थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते. इन ए डेमोक्रेसी इन विच द ऑल पीपल आर इक्वल. ये हमारे देश में जो प्रजातांत्रिक देश है, इसमें हर आदमी को बोलने का अधिकार, हर आदमी को अपने जीने का अलग अलग अधिकार है. ठीक है, अपने तरीके से वो जीते हैं. एंड द शुड बी एबल टू लीड टू लाइफ of dignity. Advertising leads to promotes the certain lack to respect for their poor. They are not the faces or we must often see in advertisements, and so we tend to dismiss their lives or worthless. Advertisements because of the appeals of the personal emotions and also tends to make people who cannot afford certain brands feel bad. They feel that they are unable to give their loved and own's best care for their brand and प्रोडक्ट्स अपियर टू अदर्स. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में जिससे पढ़ाई को जारी रखते थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते. एडवर्टाइजमेंट्स बाय द फोकसिंग ऑन द लिप्स ऑफ द रिच एंड फेमस हेल्प्स इन द फॉरगेट अबाउट द इशू ऑफ द पॉवर्टी. इसमें देखिए हर तरह के लोगों को इससे फ़ायदा होता है. अमीर से अमीर लोगों को भी फ़ायदा होता है, गरीब से गरीब लोगों को इसमें फ़ायदा होता है. डिस्क्रिमिनेशन एंड द डिस्क्रिमिनेटी ऑल ऑफ विच आर द सेंट्रल ऑफ द इन्फ्लुएंस. देखिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं मार्केट में जो ऐसे जिसका कॉस्ट 100 रुपीज़ से 80 रुपीज़ है, वो प्रोडक्ट स्मॉल पैकेज में भी कंपनी वाला प्रोवाइड करते हैं. 5 रुपये में मिल जाते हैं, 2 रुपये में मिल जाते हैं. ठीक है, उसको कोई भी से गरीब आदमी उसका इस्तेमाल कर सकता है. ऑल ऑफ विच आर द सेंट्रल ऑफ द functioning of equality in a democracy. More than just selling us the products, advertisements tell us how to should live our lives, what we should accept and dream for, how do we should express our love, what to means be smart, successful and beautiful as a citizens of a democratic society. It is important that us to be aware of the strong influence the advertisement has on our lives by critically understanding what advertisements do. We want to make their better decision about whether we wish buy a product or then. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. आज हम लोग क्लास 7 का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7 का अंडरस्टैंड एडवर्टाइजमेंट, ये मेरा सेकंड वीडियो था. इसको हम लोग आज इस ध्यान से सुनेंगे. इससे पहले भी एक पहला वीडियो मैंने दिया था लास्ट वीक में, तो इसको ध्यान से सुनेंगे. एडवर्टाइजमेंट के बारे में, कैसे एडवर्टाइजमेंट का क्या होता है, इसमें क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, पब्लिक को कैसे क्या पता चलता है, इसके बारे में सारी चीज़ मैंने आप लोगों को बताया. टॉप टेस्ट डाल, बेस्ट टेस्ट डाल के बारे में, शॉप के बारे में, इसको ध्यान से सुनेंगे. कहीं कोई दिक्कत होने से लाइव क्लास में जिससे स्टे शॉप स्टे होम. थैंक यू.